प्रार्थनया वयं वर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। अद्य प्रार्थना मया स्थापिता अस्ति खलु। सर्वे मनसि एव तस्याः पठनं कुर्वन्तु। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आज्ञा जगद्व्यापिनीम् वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां चाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतं करोमि। कोविद पाठ्यक्रमे व्याकरणविषयेषु तद्धितानाम् अध्ययनम् अस्माभिः समाप्तम्। गतवर्गे णिजन्तानाम् अध्ययनम् अपि अस्माभिः समाप्तम्। अद्य वयं सन्नन्तानाम् अध्ययनं प्रारभामहे। सन् इति कश्चित् प्रत्ययः। यदा वयं जानीमः पदस्य निर्माणं कथं भवति, प्रकृति प्रत्ययोः मेलनेन पदस्य निर्माणं भवति न खलु। पदं द्विविधम् अस्ति, सुबन्तं तिङन्तं च। सुप् प्रत्यय यस्य अन्ते अस्ति सः सुबन्त, तिङ् प्रत्ययः यस्य अन्ते अस्ति सः सुबन्तः तिङन्तः। तादृशमेव प्रकृतिः अपि द्विधा भवति, प्रातिपदिकं तथा धातुः। सुबन्तानां कृते प्रातिपदिकम् इति प्रकृतिः भवति, तिङन्तानां कृते धातुः इति प्रकृतिः भवति। What I mean by prakriti is the root word based on which by adding a pratyaya or a suffix we can make either a sup pratyaya or a ting pratyaya. Without making a padam, we cannot use any word in the Sanskrit language. Apadam na prayunjita. तर्हि यदा पदं द्विविधं भवति, प्रकृति अपि द्विधा भवति, प्रातिपदिकं तथा धातुः। परन्तु प्रत्ययानां सप्त प्रभेदाः सन्ति। एतेषु सनादि प्रत्ययः, विकरण प्रत्ययः, तिङ् प्रत्ययः, कृत् प्रत्ययः, सुप् प्रत्ययः, स्त्री प्रत्ययः तथा तद्धित प्रत्ययः। एते अधोलिखितानि अधोलिखिताः ये त्रयः प्रत्ययाः सन्ति, सुप्, स्त्री तथा तद्धित प्रत्ययः प्रातिपदिकेभ्यः विधीयन्ते. So all the bottom three pratyayas are attached with pratipadikam. The vikarana pratyayah, ting pratyayah तथा कृत प्रत्यय धातुभ्यः विधीयन्ते. So the three pratyayas above them are vikarana, ting and krut are attached to dhatu. प्रथम प्रत्ययः गणः सनादि प्रत्ययः। एते प्रत्ययाः विशिष्टाः सन्ति। एते प्रत्ययाः प्रातिपदिकेभ्यः अपि विधीयन्ते, धातुभ्यः अपि विधीयन्ते। परन्तु एतेषां प्रयोगेन
सर्वदा नूतनानां धातूनां निर्माणं भवति. Even if they are attached to a pratipadikam or a dhatu, the resultant is always a new dhatu, not a pratipadikam. So for example, we have studied the Rijanta in the last class. Patha plus nich is pathi. So patha is a dhatu, upadeshika dhatu, and then we have added a nich pratyaya. We got a new dhatu called pathi, which is called a pratyayanta dhatu. Dhatu we get by adding a pratyaya is called a pratyayanta dhatu. पाणिनिना द्वादश सनादि प्रत्ययः उक्ताः सन्ति. ते सन्, क्यच्, काम्यच्, क्यं, क्यश्, णिं, नी, यं, यक्, आय, इयं, क्विप्. एते द्वादश प्रत्ययाः सन्ति. ते सनादि प्रत्ययाः इति उच्यन्ते. So this, the group of 12 pratyayas given by Panini are called Sanadi Pratyaya, means starting with a San Pratyaya. Okay? San Adi Pratyaya. Kiं karoti ete pratyaya yatha purvam drashtam nutananam dhatunam nirmanam. Ete kechana pratyaya pratipadikebhya vidhiyante, केचन प्रत्ययः धातुभ्यः विधीयन्ते. केवलम् अणिच प्रत्ययः धातुभ्यः अपि विधीयते तथा प्रातिपदिकेभ्यः अपि विधीयते. सो ये प्रातिपदिकेभ्यः विधीयन्ते ये प्रत्ययाः क्यच्, काम्यच्, क्यं, क्यश्, णिं, णिच्, क्विप्. ये प्रत्ययाः धातुभ्यः विधीयन्ते ते सन्, णिच्, यं, यक्, आय, iyang. So these pratyayas, don't write anything, Bhagini. I will put the slide in a day or two. Don't worry. Just focus on what I'm teaching. You will get everything, including the videos as well as the study materials. So don't worry. So एतावत् पर्यन्तम् अवगतं खलु? सन्देहः नास्ति? नीच प्रत्यय नीच प्रत्यय ऊपर क्यों नहीं आ गया? प्रत्यय हाँ, सनादि प्रत्यय है तो सन प्रत्यय है आदि में जिसके है वो. हम लोग व्याकरण क्लास किए थे तो आदि संज्ञा किसकी होती है? जो सबसे पहले होता है उसकी. तो सन जिसके आदि में हो वो प्रत्यय सनादि प्रत्यय. धन्यवाद. ठीक है. हाँ. सो पाणिनिना आहत्य 2,000 धातवः उक्ताः पाणिनि धातुपाठे. एते धातवः औपदेशिक धातु इति उच्यन्ते. वादयो धातवः इति सूत्रेण तेषां धातु संज्ञा भवति. If I say this pratyaya is attached to be attached to a dhatu, so first we must know what is called a dhatu, right? Otherwise we will not be able to differentiate what is a dhatu and what is a pratipadikam technically. So that is why as soon as you start a prakriya, the first step after selecting a dhatu is to make a dhatu sanya. Dvadayo dhatavah तथा ये प्रत्यांत धातवः सन्ति तेषां कृते सनादन्त्या धातवः. So by these two sanyas we are identifying the particular word is a dhatu and not a pratipadikam. So whatever the pratyayas are supposed to be attached to a word called dhatu, now that we have identified that word, which is a dhatu, and now that we can use a particular pratyaya to it. Okay. So first, in any step, even if I start a gachati, so first I have to identify gam is a dhatu and is not a pratipadikam. Right?
because if I identify as a pratipadikam, you cannot use ati pratyaya, because these are tiganta ting pratyayas and are supposed to be used with a dhatu and not with pratipadikam. And stri, sup and tadhit pratyayas are attached only to a pratipadikam and not to a dhatu. So we have to be very clear in our mind what is our prakriya and what are we going to do with a particular dhatu prakruti. Rather, I use the word prakruti. Now, to start with today's subject, sana pratyaya or san pratyanta shabdaha. Sana pratyaya yasya ante bhavati te sanadanta dhatu अथवा शब्दः. सन्नन्ताः 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 का सन्धि भवति अत्र? सन्नन्ताः. अन्वित भवतु. गमुडागम गमुडागम. कदा भवति गमुडागम सन्धि? पदान्ते नकारस्य पूर्वं ह्रस्व अकारं परे स्वर अक्षरम् अथवा अकारं न ह्रस्वस्वरं परे स्वर अक्षरः अस्ति चेत् द्वित्वं भवति. अत्र द्वित्वं कुत्र मया कृतं? Don't call it a dvitvam, we call it nakarasya agamah bhavati. That is called num agama. Num agama. See, all you have forgotten. I have wasted 15 class just to teach you Sanyas, and still you forgot everything. So, udaharanani pashyama. Ramah gacchati. This is a standard vakya. Ramah gantum ichchati. Ramasya इच्छा अस्ति सः कुत्रापि गच्छेत् इति. रामः जिगमिषति. रामः जिगमिषति. बालाः पठन्ति. बालाः पठितुम् इच्छन्ति. बालाः पिपठिषन्ति. पिपठिषन्ति. So what we are seeing here is a desire to do something. Ramah gantum ichchati. So he is desirous of going, or he has the desire to go. So gantum, whatever the ichha is, or the dhatu belong to that particular ichha, is attached to a tuman pratyaya. And we have to use a ish dhatu. So Ramah gantum ichchati. Actually, tasya ichha asti gaman kriya kartum. So gaman kriyayaha krite gam dhatu maya sukritam. Tasya tumanantarupam gantum iti maya sukritam. Tadanantaram ish dhatoho lakara rupam maya sukritam. Ramah pratham purush ekvachana asti chet ichchati iti ish dhatoho लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचन रूपम इष्यति. So to express my desire to do something, we have two options in Sanskrit Vyakaranam. Either to add a tuman pratyaya and add a ish dhatu, or to take the original dhatu which I want to do something and add a san pratyaya. In the first sentence, he wants to go. So go is the actual kriya he wants to do. Please take that he hasn't yet started the kriya, he has just the desire in his mind. So he wants to go. Now he wants to do something, right? Whatever it can be, to do it right, go, anything. That particular his wish and the dhatu, corresponding dhatu, is expressed in tumananta padam plus ish dhatu in gantum ichchati, or that dhatu plus san pratyaya rupam. It is up to us or the writer or the reader to choose what he wants to do.
एतावत् पर्यन्तं वयं केवलं गन्तुम् इच्छति इति किञ्चित् बालः प्रयोगः इति वयं वदामः। इदानीं भवन्तः सर्वे किञ्चित् प्रौढाः भवन्ति खलु, व्याकरणे प्रौढाः भवन्ति। अनन्तरम् अनेन किञ्चित् प्रौढाभ्यासः अस्माभिः क्रियमाणः अस्ति। यथा नाट्यशास्त्रे अथवा किञ्चित् वयं ग्रन्थानाम् अभ्यासं कुर्मः, तस्मिन् एतादृशाः शब्दाः वयं प्राप्तुं शक्नुमः। अतः अस्मिन् स्तरे केवलं तेषां परिचयः एव अस्माभिः कर्तव्यम्। प्रक्रिया आवश्यकता नास्ति। So you don't need to understand how this form has been derived. You just see that this is the lat lakara rupam and what it means. Right? Gantum ichhati equal to jigamishati. That's all. Jigamishati. That's all. Khaditum ichhati chikhadishati. That's all. So if you come across these words, then you have to write a vigraha vakyam. Or in the exam, they will give you a vigraha vakyam and you have to write the corresponding padam, sannanta padam. So this is how the exam, they will ask you in the exam. Okay. But we will go a little deeper in this class because I am not teaching you just for the examination part. We'll little bit go into the deeper section, how a dhatu is getting doubled and a little bit of prakriya of how the rupam we will deduce from the particular dhatu. But at the later stage, not now. First, let us familiarize ourselves with this rupani. So, यदा इच्छा प्रकटीकर्तुम् अस्माकं समीपे इच्छार्थक धातुः प्लस तुमन प्रत्ययान्त रूपम प्लस इष् धातुः लकार रूपम। गं प्लस तुमन गंतुम इच्छति इष् धातुः लट् लकार रूपम। परंतु अत्र मूल धातुः सन् प्रत्ययान्त रूपम जिगमिषति। अस्तु, तदेव एतयोः मध्ये कोऽपि भेदः नास्ति। गन्तुम् इच्छति जिगमिषति अनयोः अर्थः समानम् एव। This is your vivaksha. How would you portray or how would you write in the sentence, right? So gradually we will have to upgrade ourselves from gantum ichhami, so jigamishami. This is how would you write. So this is the first thing. Sannante yujyamane sati dhatoho dvitvam bhavati. सूत्रम अपि मया लिखितम् अस्ति संयंगोः इति। सन् तथा यंग प्रत्यये परे धातूनां द्वित्वं भवति। Now what is a द्वित्वं? You may ask. Keep this mind, your question a little bit for later. I'll come across everything. Dvitvam by default is the doubling of a part or the whole of a dhatu. Like dadati is original is a da dhatu. We are getting a form called dadati. Right? This is a dvitvam. But here there is some special rules are there. यदा नूतन धातुः भवति तदा दशसु लकारेषु तस्य प्रयोगः भवति. Because we are getting a new dhatu altogether, like anijanta. Nijanta also we will get a new dhatu called like pathi, and we get all the rupams in 10 lakaras and all vibhaktis in the krudantas in all vibhaktis. Similarly here for the sannanta also we will have a new dhatu. It is used in all 10 lakaras and in the krudantas all 7 vibhaktis, 7 into 3 vibhaktis. Okay. But in Kovita, we are only using lat lakar rupam, a pratyayanta rupam, tatha u pratyayanta rupam. Lat, a and u. So these are pratyayas name. A and u are the pratyaya. Okay. Just like a san pratyaya.
रूपेषु स अथवा श इति अन्ते श्रूयते। जिज्ञास, पीपठिष, सुषुप्स, चिकीर्ष अन्ते श्रूयमाण अस्ति. So this is how we identify a dhatu, being a sannanta dhatu. Like a nijanta dhatu, we could identify a hrasva ikaranta dhatu, pathi, kari. So all dhatus will be hrasva ikaranta dhatu. And here it will be ending always with either a danta sakar or a murdhanya shakar. लकार रूपाणि भवन्ति पिपठिषति, पिपठिषतु, अपिपठिषत्, पिपठिषेत्. Lat, lot, lung, and vithiling. Right? All 10 lakars will be possible, but I mentioned only 4. Krudanta rupani, pipathisha, pipatishuhu, pipatishan, this is Shatru Pratyanta Rupam, pipatishita, this is Trich Pratyanta Rupam. All rupani is possible because it is altogether a new dhatu. This will be a little newer thing to you, so take it lightly. Yeah, nothing to be afraid of. How suddenly the rupam is changing, and this is totally a new thing hitting you like out of nowhere. So don't be afraid. We'll start and finish the journey together. So how will be a Sannanta Rupani in what we have to study, right? Patitum ichchati. Lat lakare pratham purushe pi patishati. Pi patishati. So pi patisha is a new dhatu, and we are adding a tip pratyaya to make it a pratham purush ekvachan rupam. Pi patishati. Now same dhatu, we are adding an a pratyaya to get a desire, just the desire. Pi patisha. Here it is a desire and not the person, mind that. And u pratyanta shabda, which identifies the person who is having the desire. Ramaha patitum ichchati. Ramasya pipatisha asti. Ramaha pipatishuhu asti. Ramaha pipatishati. Ramasya pipatisha asti. Ramaha pipatishuhu asti. So Rama wants to learn, study or read. Rama has the desire to read. Rama is a desirous of reading. So pipatishuhu is a visheshana to Rama. Kidrishasya Ramasya pipatisha asti or kidrishaha Ramaha asti. Ramaha pipatishuhu asti. So it qualifies the visheshana or visheshya. Visheshya visheshanayoho bhava bhavati. Okay? Understood? Shanka asti tatra? Shanka asti chet pruchhatu. So all these rupani we have to study. Pipatishati, pipatisha, pipatishuhu. 3 roops. And all these 7 vibhakti in the Krudant, all the 7 vibhaktis, 7 into 3. And in case of Latlaka Rupam, all these 3 into 3 rupani. Pipatishati, pipatishataha, pipatishanti, pipatishasi, pipatishataha, pipatishatha, pipatishami, pipatishavaha, pipatishamaha. These 9 rupas and 7 into 3 vibhaktis for 2 Krudantas we have to study. Okay? Understood? Now what is the general pattern we are going to learn in these 2-3 classes, whatever. Let us start with Udaharanani. Let us go to some Udaharanani so it will make you all clear. Bhaktaha Bhagavad Gitam Patitum Ichchati. Bhagavad Gitam Patitum Ichchati. So the devotee has a desire to read Bhagavad Gita or wants to read Bhagavad Gita. Patitum Ichchati. This is a standard vakya without using a sanpratyaya.
Bhaktah Bhagavad Gitaam Pipatishati. This is a Sannant Vakyam. The meaning is same for both first and second sentences. Bhaktasya Bhagavad Gitaam Patitum Ichha Asti. Bhaktasya Bhagavad Gitayaha Pipatisha Asti. Bhaktasya Bhagavad Gitayaha Pipatisha Asti. So this Pipatisha is used in the sixth vibhakti. Sambandhe. And here please mind that Bhakta or Bhagavad Gita is not a karta. We just indicate a sambandha. Okay? So don't confuse with Pipatishuhu. Bhaktah Bhagavad Gitam Patitum Ichuhu Asti. Bhaktah Bhagavad Gitam Pipatishuhu Asti. Now he is the person who wants to read. So Pipatisha denotes the Ichha, what he is desire, he has a desire. Now Pipatishu, it defines the person who has that desire, Pipatishu. And standard Pipatishati is the standard sentence. Apparently, you will not find any difference in Bhaktah Bhagavad Gitam Pipatishati, Bhaktah Bhagavad Gitam Pipatishu Asti. Apparently, there is no difference at this stage. But we will extend that usage when we gradually follow the classes. Right? That is how we are using a Krudanta, and this is the flexibility of a Sanskrit language. How beautiful it can be. Balakaha jnatum ichchati. Balakaha jignasate. Guruhu shrotum ichchati. Guruhu sushrushate. Chhatraha vaktum icchanti. Chhatraha vakshanti. Bhaktaha muktum ichuhu. Bhaktaha mumukshuhu. We come across mumukshuhu many times. So what is the meaning of this? Mumukshuhu, who wants to get rid of all attachment in the life, right? Worldly desires, all worldly attachment, mumukshuhu. So this is the mumukshuhu. We will find many a times in Bhagavad Gita or all the religion scriptures. So this is mumukshuhu. What is the Utpatti of word mumukshuhu? धातु अत्र मुञ्च धातु मुच धातु मोक्षं प्राप्तं इति अस्ति। प्रश्नः अस्ति वा? त्वम् इदं कार्यं कर्तुम् इच्छसि किम्? त्वम् इदं कार्यं टङ्कणदोषः अस्ति। त्वम् इदं कार्यं चिकीर्षसि किम्? चिकीर्षसि, कर्तुम् इच्छसि, चिकीर्षसि। कर्तुम् इच्छा, चिकीर्षा, कर्तुम् इच्छुः, चिकीर्षुः। अहं मैसूरु नगरं जिगीषुः अस्मि, गन्तुम् इच्छुः अस्मि। I want to go to Mysuru Nagaram. मुमुक्षवः सर्वे आदौ उपनिषदः गीतां ब्रह्मसूत्राणि च पिपठिषन्ति, पठितुम् इच्छन्ति. Those who wants salvation or liberation, so they start reading Upanishada, Gita and Brahma Sutrani in the beginning. Alasoyam sada sushupsati utthitaschet bubhukshate. So this lazy person is always sleeping. As soon as he gets up, he again starts eating. Alasoyam sada sushupsati utthitaschet bubhukshate. Bhoktum ichchati bubhukshate. Bhoktum ichchati bubhukshate. Aham upahara mandiram jigamishhu. Kshiram pipasuscha. Aham upahara mandiram gantum ichuhu asmi.
क्षीरं पातुम् इच्छुम् अस्मि. I want to drink the milk and I want to go to a restaurant. सः बाहुभ्यामेव नदीं तितीर्षति. सः बाहुभ्यामेव नदीं तितीर्षति. He wants to cross the river by his two hands only, not by boat. He will swim across the river and cross, and not by using a boat. बाहुभ्यामेव तितीर्षति. अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? अलसोऽयं सदा सुषुप्सति ते शेतुं का किं वदामि? स्वप्तुं स्वप्तुं, इच्छति. स्वप्तुं. स्वप् धातु. हम्म। स्वप्ति. महोदय, मुमुक्षवः, ये मुमुक्षु का बहुवचन है. हाँ, तो ये कौन से उसमें पड़ेगा? जैसे इसका और कोई बताइए. आप सोचिए कैसे है, कौन से विभक्त, कौन सा रूप, उकारांत रूप में कौन सा पुल्लिंग शब्द आता है, आप बताइए मुझे. और कोई नहीं बताएगा. अनुजी, रेणु जी बताएंगे, और कोई नहीं बताएगा. गुरु. हाँ, बस तो गुरु का बोलिए, पहले तीन विभक्ति बोलिए. प्रथमा में गुरु, गुरौ. गुरु नहीं है, गुरु नहीं है. ध्यान से बोलिए क्या है. और कोई नहीं बोलेगा प्लीज. गुरु. गुरु शब्द है, प्रातिपदिक है, लेकिन हम प्रथमा विभक्ति में कैसे बोलते हैं? गुरुव. नहीं, एक वचन. एक वचन. क्योंकि गुरु तो नीचे षष्ठी नहीं, अब में हम लोग अब प्रथमा में ही है, अभी षष्ठी नहीं जाएंगे. पहले प्रथमा का खत्म करिए खेल, बाद में. गुरु गुरवः. हे भगवान, गुरौ. मया निवेदितम् आसीत् खलु, अन्य कोऽपि मा वदतु. गुरुः, गुरौ, गुरुवः. गुरुवः कि नहीं. गुरवः? अब मुझे लगता है कि मुझे पहले से अभ्यास कार्य सिखाना पड़ेगा. अभी एक एक क्लास हम करेंगे, अब विभक्ति से शुरू करना पड़ेगा मुझे. गुरुः, गुरु, गुरवः. गुरु, गुरु, गुरवः. सो मुमुक्षुः, मुमुक्षु, मुमुक्षवः. मुमुक्षवः, मुमुक्षवः. मुमुक्षुः, मुमुक्षु, मुमुक्षवः. सत्या भगिनी, एकवां कार्यं करोतु, एकम् अभ्यासवर्गं स्वीकरोतु. सर्वे जनाः आगत्य लकाररूपाणि तथा विभक्तिरूपाणि पठन्ति. एकस्य वर्गस्य आरम्भं करोतु. खलु? अन्य कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति? अवगन्तुं वाणीश्री भगिनी. आम् महोदय, अत्र एतत् बुभुक्षः इति भाकार आगच्छति, परन्तु जिज्ञासा वर्ड वी आर गेटिंग झ. So is it the whatever the Yes. thing? I'll be coming to. Don't worry. Just focus on the right. This is the rupam. How it comes, that is my duty to teach you. Yeah. Okay. Okay. धन्यवाद. Okay. एतावत् पर्यन्तम् अवगम्यते वा? आम् महोदय. आम्. So this एतावत् पर्यन्त what we have learned is just telling how we are using the san pratyant shabda in a sentences. How we can use them. Okay. So now we are coming to the rupani, actual rupani of say 20-25 dhatus, and we will try and practice. Read the dhatu at least once a day, and you will have the idea. So pat dhatu, lati, pathati. Standard dhatu will be pathati, lak lakare. Sannanta will be pipatishati. Akar apratyant shabda pipatisha. Upratyant shabda pipatishuhu. Pathati, pipatishati, pipatisha, pipatishuhu. Gam dhatuhu gacchati, jigamishati, jigamisha, jigamishuhu. Now start. Renu Bhagini, next two Raksha and Dhava dhatu.
रक्ष रक्षति रिरक्षिषति रिरक्षिषा रिरक्षिषुः रिरक्षिषुः धाव धावति दिधाविषति दिधाविषा दिधाविषुः। उत्तम। सत्या भगिनी खाद बंद। खाद धातु खादति लट्लकार मध्ये चिकादिशति चिकादिशा चिकादिशुः। वंद धातु वंदते आत्मनेपदी रूपं विवन्दिशते विवन्दिशा विवन्दिशुः। एकवारं पुनः वदतु सन्नन्त रूपम् एकवारं पुनः वदतु। लटि न चिखाद खाद धातु खाद धातु खाद धातु खादति लट्लकार मध्ये चिकादिशति सन्नन्त रूपं चिखादिशति चिखादिशति महाप्राण चिकादिशति न अस्तु चिखादिशति अस्तु महाप्राण महोदय। चिकादिशति चिकादिशा चिखादिशा चिखादिशुः. चिकादिशुः। So we have to differentiate, isolate the alpa prana and mahaprana. Okay, ga and Astu, kha Mahoday. is different. Ga and kha is different. Pa and pa is different. Now modate and shobhate. Somashekar Mahoday. Modate shobhate. आं महोदय मुद् आत्मनेपदी धातुः मोदते मुमोदिशते मुमोदिशा मुमोदिशुः शुभ धातुः आत्मनेपदी शोभते शुशोभिषते शुशोभिषा शुशोभिषुः। उत्तमं धन्यवादः। धन्यवाद महोदय। इदानीं सुजाता भगिनी। हाँ वर्ध धातु वर्धते एक्चुअली धातु विल बी वृद्ध। वृध वर्धते विवर्धिषते विवर्धिषा विवर्धिषुः। पा धातु पिबति पिपासति पिपासा पिपासुः। ओके पिपासति पिपासा पिपासुः। ज्ञा धातु पद्मावती एस महोदय। पा ज्ञा ज्ञा धातु जानाति जिज्ञासते जिज्ञासा जिज्ञासुः। या धातु याति इयासति इयासा इयासुः। उत्तमं धन्यवादः। पूर्णिमा श्रीनिवासन महोदय। दृश्य वच। हाँ महोदय। दृश् दृश्य पश्यति दिदृक्ष्यते दिदृक्षा दिदृक्षुः। उत्तमं। वच वक्ति विवक्षति विवक्षा विवक्षुः। उत्तमं धन्यवादः। धन्यवाद। सुषमा महोदय। पच मुच। पच पचति विपक्षति विपक्षा विपक्षुः। मुच मुञ्चति मुमुक्षति मुमुक्षा मुमुक्षुः। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय वच धातु तो उच्यते वच धातु ये कर्मणि नहीं है, कर्मणि नहीं है, सन्नंत है, तो कंफ्यूज मत करिए। नहीं वक्ति। हाँ वो वक्ति है, वो लट लकार में वक्ति होता है उक्ति और नहीं। जब उक्ति नहीं होता है। हाँ संप्रसारण धातु है, कहाँ पर यूज होती है संप्रसारण में? आपने तो संप्रसारण का रूप किया है ना। उक्ति उच्यते कर्मणि में आएगा। हाँ 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 पूज्यते वो आएगा उसमें। तो जब आगे बढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा, अभी नहीं। धन्यवाद। कंफ्यूज अभी बाकी सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। भुज एंड युज। कौन बोलेगा? सुंदरेश महोदय स्वागतम। भुज युज। भुज भुङ्क्ते
बुभुक्षते बुभुक्षा बुभुक्षुः युज् युङ्क्ते युयुक्षते युयुक्षा युयुक्षुः। उत्तमं, धन्यवादः। माधुरी अय्यर महोदय। कृ करोति, चिकीर्षति, चिकीर्षा, चिकीर्षुः। तृ तरति, तितीर्षति, तितीर्षा, तितीर्षुः। उत्तमं, धन्यवादः। शंकर महोदय। स्वप भू। या स्वप धातु स्वपिति सुषुप्सति सुषुप्सा सुषुप्सुः। भू धातु भवति बुभूषति बुभूषा बुभुषु बुभूषुः। प्रतिमा सुब्रमण्यम प्लीज। नमस्कारः लिख दाता, लिख तथा दा। लिख धातुः लिखति, लिलेखिषति, लिलिखिषति, लिलेखिषा, लिलिखिषा, लिलेखिषुः, लिलिखिषुः। दा धातु रूपद्वयं भवति। लिख धातुः रूपद्वयम् अपि भवति। लिलेखिषति, लिलिखिषति। दा धातु। दा धातुः ददाति, दित्सति, दित्सा, दित्सुः। उत्तमं, धन्यवादः। So there are some dhatus are special dhatus. You just remember how it is formed, because this is special sutrams and Panini. If you need a Panini sutra adhyayanam, so we are not doing deeper into this. Whatever the roop you are seeing, just remember. Okay. So G and Han, Keur Mahoday. G जयति, जिगीषति, जिगीषा, जिगीषुः। हन् हन्ति, जिघांसति, जिगांसा, जिगांसुः। उत्तमं, धन्यवादः। इदानीं कम् आह्वयामि आईफोन महोदय। अहं वदामि महोदय। ये वीडियो उद्घाटयन्ति अहं तेभ्यः अवसरं ददामि। अहमपि अवशेषः अस्ति। लक्ष्मी रामचंद्रन महोदय वदतु। अहं वदामि। लक्ष्मी भगिनी रामचंद्रन वदतु। आप धातुः आप्नोति, ईप्सति, ईप्सा, ईप्सुः। श्रु धातुः शृणोति, शुश्रूषते, शुश्रूषा, शुश्रूषुः। उत्तमम्। ग्रह महोदय, श्रु धातु शृणोति इति लट्लकार मध्ये परस्मैपदिरूपं भवति, बट शुश्रूषते किमर्थम्? I'll come. There are the exceptions. I'll come across. So now सुरेखा महोदय स्वागतम्। बहुभ्यः दिनेभ्यः अनन्तरं भवतः दर्शनं प्राप्तम्। अद ग्रह सुरेखा महोदय। अन्म्यूट् भवतु आदौ। हाँ, ग्रह धातु गृह्णाति, जिगृक्षति, जिगृक्षा, जिगृक्षुः। अद् धातु अत्ति, जिगस्सति, जिघस्सति, 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 जिघस्सा, जिघस्सुः। So these are some rupani you have to. Ad dhatu meaning it's ad. Ad is to eat. To eat. Eat. Atti. Okay. Then. Here this Shushruksha, that about treatment also we will yes. use it. Sevate ityarthe api bhavati, parantu tana rupam sushrushate api shru dhatuh api bhavati. So अदर धातु मीनिंग क्या बताया आपने? खाना। क्या बताया? खादति। खाना। अत्ति खादति।
खादति। अश्नाति, ये एक ही सब अर्थ में। सो हम लोग रूप जो यहाँ पर आपने देखा, सो पूर्ववत सन, पूर्ववत सनः, ये एक सूत्र है। धातु का रूप कैसा होगा? ओरिजिनल धातु ऑफ सन, व्हेन वी आर कन्वर्टिंग इनटू सन धातु, तो पूर्ववत सनः वो एक सूत्र है। जो परस्मय पदी है वो परस्मय पदी ही रूप रहेगा, जो आत्मनेपदी है वो आत्मनेपदी रूप रहेगा। पिपठिष्यति और विवन्दिष्यते, ठीक है। लिलेखिष्यति, सुशोभिष्यते। But there are 4 dhatus which have exceptions. Jna, Shru, Smru and Drash. 4 dhatus. Jna dhatu, Shru dhatu, Smra dhatu and Drash. These will have Atmanepadi Rupam. So, Tidrukshate, Jignasate, Susmurshate, Sushrushate. This will be the Rupani. Only 4 dhatus you have to remember, otherwise they will belong to the original form. If it is a parasmaipadi, Sannanta will be a parasmaipadi. If it is Atmanepadi, the Sannanta will be Atmanepadi, except the 4. Jna, Shru, Smru, Drash. सूत्र है ज्ञा, श्रु, स्मृ, दृशाम सनः, ये सूत्र है। तो 4 धातु आपको याद रखनी है, ज्ञा, स्मृ, श्रु और दृश। ये 4 धातु में आत्मनेपदी होगी, बाकी सभी में एज पर ओरिजिनल। सो लेट अस स्टार्ट विथ सम एग्जांपल्स एंड अभ्यासा। So this is the chikhadishati. So vigraha katham karaniyam? Yada pipatishati patitum ichhati. So let us start with खादितुम इच्छति क्या? हाँ, चिखादिति। हाँ चलो, सुजाता महोदय ने पहले ही बता दिया, चिखादिशति खादितुम इच्छति। अच्छा, अब जो है जिसको बुलाऊंगा वही बोलेंगे, ठीक है। केयूर महोदय, बुभुक्षते। बुभुक्षते भुंज धातु, भुंक्तम इच्छति। भुज धातु, भुज भुंक्तम इच्छति। भोक्तुम इच्छति, भोक्तुम इच्छति। सविता मोरवाल महोदय, चिकीर्षति। कर्तुम् इच्छति। उत्तमम्। वाणीश्री महोदय, प्रेप्सति। प्रेप्सति, प्राप्तुम् इच्छति। एग्जैक्टली, प्राप्तुम इच्छति। हाँ। आप धातु इप्सा, आप्तुम इच्छा इज इप्ता, इप्सा, प्राप्तुम इच्छा प्रेप्सा। दित्सति, लक्ष्मी रामचंद्रन महोदय, दित्सति। दित्सति दातुम् इच्छति। उत्तम, दातुम् इच्छति। पद्मा नागेश महोदय, पिपक्षति। पातुम् इच्छति। पिपासति, पातुम् इच्छा पिपासा, दिस इज पिपक्षति। प्लीज डोंट, एनी अदर वन पर्सन डोंट से एनीथिंग। पिपासा, पिपासति इज पातुम् इच्छति। What I was is pipakshati. Let us first remove the first line. P, let us remove the first P. Now I didn't try this. Which dhatu is there? Sorry, Mahodaya. Pipakshati, pipakshati. Paksha. Paksha. Pachati. Exactly. Now we can try. So, pakam karoti. Pakam karoti is a different thing. Sorry. Tuman pratyanta. What you have told me is a vibhajya prayogaha. Pakam karoti is a vibhajyam prayogaha. This is the tuman pratyanta.
पक्तुम इच्छति, पक्तुम इच्छति, पक्तुम इच्छति, पिपक्षति पक्तुम इच्छति, तुम इच्छति। जिघृक्षति, प्राजक्ता साम्रे महोदय, जिघृक्षति, ग्रहीतुम् इच्छति, ग्रहीतुम् इच्छति, गृहीतात्, उत्तमम्। जिगीषति, सोमशेखर महोदय, जिगीषति, जिगीषति महोदय। प्रयत्नं करोतु, ऊहां करोतु। अस्ति महोदय। अस्तु, प्रतिमा सुब्रमण्यम महोदय। और कोई नहीं बोलेगा? अहम सर, अहम वदामि। ना, मैं पूछूंगा आपको, सबको, सबसे पूछूंगा। ओके ओके। गी अस्ति, गी। So this is some special dhatu. So don't go for this immediate, but try to guess. Don't refer the book, Renu Bhagini. Don't refer the book. गातुम् इच्छति वा महोदय? नहीं. Jetum ichchati. Who wants to desire, to win. Desirous of winning. Jetum ichchati. Jikrukshati. What Okay, is for Vijigishati. gatum ichchati, Mahodaya? Then what is for gatum ichchati? You caught me off guard. I'll come to it. Right? Let us finish this in the meanwhile. गै धातु अस्ति खलु? अस्तु, अत्र इदानीमेव अत्र पश्यन्तु। जिघृक्षति, अत्र जिगीषति, जेतुम् इच्छति. There is a one called with V upsarga, Vijigishati. There's also is asked in the exam. Vijigishati. So Vijay प्राप्त करना किसी के ऊपर में. Vijigishati. Now this will be a little bit difficult. Jighatsati. महोदय, ये जिघृक्षति क्या था? ग्रहीतुम् इच्छति. ग्रहणम, जिसको ग्रहणम करना है. ग्रहणम ग्रहीतुम् इच्छति. जिगीषति हो गया जिघत्सति. जिघत्सति. अहं वदामि महोदय. अहं वदामि वा महोदय? जिगत्सति. I want to give to someone else who is a new one. Rajesh Mahoday, वक्तुम् इच्छति वा? विवक्षते किम्? जिघत्सति अहं न जानामि महोदय, परन्तु अहं चिन्तयामि हन्तुम् इच्छति. उत्तमम्, हन्तुम् इच्छति. धन्यवादः. उत्तमम्. पिपृच्छिषति. पिपृच्छिषति. जिगत्सति अत्तुम् इच्छति न महोदय? अत्तुम् इच्छति न महोदय. अत्तुम् इच्छति. हाँ, हन्तुम् इच्छति जिघांसति. Sorry. Jighetsati is attum ichchati. Khaditum ichchati. Like attum ichchati. Yes, sir. Thank you, Bhagini. Jighetsati. Pipruchishati. Pipruchishati. आपने क्या बताया? जिघत्सति अत्तुम इच्छति. खादितुम, जैसे खाना, खाने की इच्छा है. अक्तुम इच्छति. अक्तुम नहीं है, अत्तुम. अत्तुम. मतलब ये जो अद धातु को घस्र आदेश होता है, घस्र करके एक स्पेशल आदेश होता है, तो इस घस्र से हम लोग को ये जिघत्सति रूप बनता है. पिपृच्छिषति. पिपृच्छिषति. प्रतिमा सुब्रमण्यम महोदय. पठितुम् इच्छति महोदय. सिमिलर. प्रष्टुम् इच्छति. प्रष्टुम् इच्छति. आपका जो गाने वाला किसने पूछा था? जिगासति. जिगासति. मैंने पूछा. गातुम् इच्छति, जिगासति. जिघांसति. जिघांसति. नाउ ऑलरेडी ये बात हो चुका है. रेणु महोदय वदतु. हन्तुम् इच्छति. हन्तुम् इच्छति, जिघांसति.
तो यहाँ पर भी 2-3 प्रक्रिया होती है। हन को हान आदेश होता है, फिर ह को फिर क वर्ग का आदेश होता है। चेंजेस होते होते इसका ये रूप बनता है। Now I have given, this is a uttarani, chikhadishati, khaditum ichchati, bhokshate, bhoktum ichchati, chikirshati, kartum ichchati, prepsati, praptum ichchati, ditsati, datum ichchati, vipakshati, paktum ichchati, jighukshati, grahitum ichchati, jigishati, jetum ichchati, jighatsati, attum ichchati, vipruchchashati, prashtum ichchati, jighansati, hantum ichchati. So I will give you the thing in a couple of days. Don't get afraid. Don't write anything. Focus in the class. Okay. प्रष्टुम इत्युक्ते प्रष्टुम, to ask. बालकः प्रष्टुम इच्छति, बालकः अपि पृच्छति. पिपासा. Now you do. I have given the apratyanta sannanta rupam. You have to do write the vigraha vakyam. Okay. Champa Amar, I don't can see. Chetri. Champa Chetri Mohoday. महोदय. Pipasa. पातुम इच्छा. Uttama. Patum Ichha Pipasa. Uttama. Venkataraman Mohoday. Jignasa. ज्ञातुम इच्छा. Uttama. Jnatum Ichha. Rohini Swami Mohoday. Sushrusha. सेवा विषये भवति किल? सेवितुम् इच्छति एवं. सेवितुम् अपि भवति, परन्तु श्रोतुम् इच्छा अपि भवति. श्रोतुम् इच्छा, शुश्रूषा. श्रोतुम्. Desire to hear, listen. ओके, यानी यहाँ पे सेवा और सुनना दोनों भी आ जाए. एक्चुअली सन प्रत्यय में शुश्रूषा, शुश्रूषते ऐसी आएगा, और जनरल उसका जो रूढ़ि प्रयोग होता है वो सेवा करने के अर्थ में होता है. जैसे हम लोग ने जब सनंत या सॉरी तद्धित किया था, तो भावे में हम लोग ने लवणस्य भावः लावण्यम किया था. लवणस्य भावः, तो वो नमकीन को भी दर्शाता है, लेकिन हम लोग रूढ़ि प्रयोग क्या करते हैं? सौंदर्य दिखाने के लिए. इसका लावण्य अच्छा है, तो इसका नमकीन अच्छा है नहीं बोल सकते. ठीक है, तो इसके लिए लगता है सेम. लवणस्य भावः लावण्यम, पर लावण्यम लेकिन लावण्य जहाँ पे भी आएगा तो हम समुद्र रूढ़ि के बारे प्रयोग में क्या होगा? रूढ़ि हम लोग जो प्रयोग है करते हैं वो हमेशा सुंदरता के हिसाब से होता है. तो रूढ़ि है वो हमेशा बली ऐसी होती है. ग्रामर से भी जब रूढ़ि प्रयोग हमेशा बलवान होता है. एक और चीज है, सेवा करने के लिए भी किसको चाहिए, ये क्या चाहिए, ये सुनना होता है या अनुभवना होता है? मैं प्रश्न नहीं समझ पाया मैम आपका. हाँ, सेवा करने के लिए, शुश्रूषा करने के लिए भी सामने वाले को क्या चाहिए, ये सुनना पड़ता है और अनुभव भी करना होता जी है. जी जी जी. थैंक यू, धन्यवाद. सेव दैट नो सर. सिसे विषयते. हाँ, सिसे विषयते. So separately available. We cannot mix up. No, but both meaning are the same. That is what I'm trying to say. Meaning are the same. Yes. Vivardhisha. Bhaduri Ayyar Mohoday. Vivardhisha. वर्धितुम इच्छा. वर्धितुम इच्छा. उत्तम. सोमशेखर महोदय, विवक्षा. भवतः विवक्षा अस्ति वा? महोदय, वक्तुम् इच्छा महोदय. उत्तमं. वक्तुम् इच्छा. प्रतिमा सुब्रमण्य महोदय, लिप्सा. लिप्सा. हाँ, लिप्सा आप्तुम् इच्छा वा? आप्तुम् इच्छा is ipsa. प्राप्तुम् इच्छा प्रेप्सा. This is lipsa. लिप्सा. Similarly, what is the meaning dhatu similar to praptum? आत्मनेपदी रूपम.
लब्धुम इच्छा। I have given you so many hints. लब्धुम् अन्य प्रतिमा महोदय लिखितुम नहीं, लभ लभ धातु लब्धुमिच्छा लब्धुमिच्छा लब्धुम इच्छा, लभ धातु, लब्धुम इच्छा। महोदय विवक्षा क्या है? विवक्षा वक्तुम इच्छा, वक्तुम आपकी इच्छा। बोलने की वक्तुम, इच्छा वक्तुम। क्या है, आप कैसे बोलने बोलना की चाहते हैं। वक्तुम। इसीलिए मैंने उनको हिंट भी दिया था सोमशेखर महोदय के, विवक्षा अस्ति किम, वक्तुम इच्छा अस्ति किम। जिगमिषा, जिगमिषा किसको बोलो, मीता पटेल महोदय, मीता बी पटेल। जिगमिषा, जेतुम इच्छा न चेतुम इच्छा इज जिगीषा, जिगमिषा। अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया, प्रयत्नं करोतु। जीवितुम इच्छा दिस इज जिजीविषा। गन्तुमिच्छा गंतुमिच्छा, गन्तुमिच्छा जिगमिषा, गम गन्तुमिच्छा धातु रहेगा ना इसमें। एग्जैक्टली, जिगमिषा। आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले जो वर्ण है उसको हटा देना है, तो आपके पास में गमीशा रहेगा। सो बाद में जो दो वर्ण रहेगा उसमें से आपको धातु को आइडिया मतलब उहाम करना है, इसको क्या बोलते हैं, गेस करना है। आम आम तो तितीर्ष, गम, गम धातु, गम गंतुम गंतुम इच्छा जिगमिषा। धन्यवाद। चित्रा महोदय, तितीर्ष, चित्रा महोदय, तितीर्ष। So shall I tell, sir? You have not asked me. Who told? This is कौन? Madhuri's. वदामि वा? चित्रा महोदय इदानीं वदतु। दरिद्रम् इच्छा। तरितुम् इच्छा, तर्तुम् इच्छा। धन्यवादः। का उक्तवती? चित्रा। No, who wanted to ask that I am not? Me. Sujata. Myself, Madhuri, sir. Madhuri Raghu. Sujata. Sir. Madhuri Raghu महोदय। Yes. अस्तु, मुमुक्ष, अच्छा, this is बुभूषा, माधुरी महोदय। बुभूषा भवितुम् इच्छा। उत्तमं, भवितुम् इच्छा, बुभूषा। Please see the difference in बुभुक्षा and बुभूषा. So one is a bhoktum ichha and this is bhavitum ichha. Bubhuksha and bubhusha. Mumuksha, muksha. Who was left? I am supposed to call her. Savita Mohoday. Moktum ichha, mumuksha. वदामि वा? ममता शर्मा महोदय, धन्यवादः। हस्त उन्नीतवती। ऋतृक्षा। वदामि वा? सुजाता। इनको मैंने बता दिया। ममता शर्मा महोदय। ठीक है महोदय। हाँ जी। द्रष्टुम इच्छा। द्रष्टुम इच्छा, ऋतृक्षा। धन्यवादः। इदानीं पद्मावती एस महोदय। नाउ दिस इज द इच्छा। ओके, एवरीवन got, so I'm skipping the उत्तराणि part. इदानीं कर्तृवाचक उप्रत्ययान्तरूपं तेषाम् अभ्यासः। मुमुक्षुः, पद्मावती एस। मुमुक्षुः। मोक्तुम् इच्छुः। मोक्तुम् इच्छुः, उत्तमम्। भवानी भगिनी भवतीमपि आह्वयामि किं? जिगमिषुः। आं महोदय, गन्तुम् इच्छुः जिगमिषुः। उत्तमं, धन्यवादः। आह्वानितवान्। अस्तु। भवती स्वमेव पाणिनि स्वरूपा अस्ति, अहं कथम् आह्वयामि? आह्वयितुमपि न शक्नोमि खलु। मा वदतु महोदय। ममता महोदय, जिगमिषुः। जिगमिषु अभवत् खलु, तितीर्षुः। ममता शर्मा। अच्छा, ममता जी को मैंने बुला लिया एक बार, बोलकर बाद में नेक्स्ट आप सुजाता जी करेंगे। आप ममता जी। तर्तुम इच्छुः। तर्तुम इच्छुः, उत्तम। चलिए सुजाता, दोनों है, तर्तुम और तरितुम दोनों रूप है, ठीक है। स्वप्तुम इच्छुः। स्वप्तुम इच्छुः। जिघांसुः, रेणु अग्रवाल महोदय। जिघांसुः।
हन्तुम् इच्छुः हन्तुम् इच्छुः उत्तमं। दिदृक्षुः सुरेखा दारेकर महोदय। दिदृक्षुः द्रष्टुम् इच्छुः द्रष्टुम् इच्छुः उत्तमं। चिकीर्षुः प्रतिमा सुब्रह्मण्यम। चिकीर्षुः कर्तुम् इच्छुः कर्तुम् इच्छुः। सोमशेखर महोदय। इप्सवः आप्तुम् इच्छवः आप्तुम् इच्छवः बहुवचने अस्ति उत्तमं। विवक्षवः सत्यामगिरि। विवक्षवः विवक्षवः वक्तुम् वक्तुम् इच्छुः विवक्षवः विवक्षवः वक्तुम् वक्तुम् इच्छवः। हे भगवान, अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया। बहुवचन के कारण है ना महोदय। एग्जैक्टली लेकिन सत्या देवी वो नहीं पकड़ पाई। विवक्षवः अस्तु। बुभूषवः वाणीश्री बीएस महोदय। बुभूषवः भोक्तुम् इच्छवः भोक्तुम इच्छा। हाँ भोक्तुम नहीं है, बुभुक्षा नहीं है, बुभूषा है। मैंने वही बोला था, चेंज डिफरेंस आप ध्यान में रखिए। बुभूषवः भू धातु। भवितुम् इच्छवः भवितुम् इच्छवः। अब वो होता तो बुभुक्षवः होता, बुभुक्षवः, और ये है बुभूषवः। धन्यवाद। कोई शंका है इसमें? भवितुम् इच्छवः। एतस्मिन् कोऽपि शंका अस्ति? कापि शंका अस्ति वा? सन्नन्ताः सरलाः खलु? न महोदय। रूपाणि एव ज्ञातानि भवन्ति, तस्य प्रयोगः सरलमेव। स्वल्पम् अभ्यासं कर्तुं अभ्यासः सर्वत्र आवश्यकम्। केवलं सन्नन्तानां कृते न, सर्वत्र सर्वत्र सर्वदा। अस्तु, वाक्यं पश्यामः। वाक्यप्रयोगः कथं करणीयः? बालाः पिपठिषन्ति। बालानां पिपठिषा विद्यते। बालानां षष्ठी बहुवचनं। बालाः पिपठिषया शालां गच्छन्ति। पिपठिषा अस्ति, पिपठिषया तृतीया विभक्ति। केन कारणेन गच्छति? पिपठिषया शालां गच्छन्ति। So this is why we can use the krudanta roop to form in different vibhaktis to designate, right? If I say pipatishati or pipatishanti, I cannot change it because it is a lakar rupam. Now I can change in a vibhakti form to go along with the karta or the apadan, samritan, karanam accordingly. So pipatisha is the original rupam, but pipatishaya iti tritiya vibhakto. यथा लता शब्द अस्ति, रमा शब्द अस्ति, तस्य तृतीया विभक्ति रूपम। पिपठिषया शालां गच्छति। बालाः पिपठिषवः पठितुम् इच्छवः। Now see, पिपठिषून् बालान् गुरुः प्रीत्या पाठयति। कीदृशान् बालान् गुरुः पाठयति? पिपठिषून् बालान् प्रीत्या पाठयति। पुनः पिपठिषुभ्यः बालेभ्यः पुस्तकानि दद्मः। So I am changing the pipatishu rupam. So to going along with the vibhakti, sampradana, apadana, shashti sambandha, karanakarakam, pipatishubhyah balebhyah pustakani dadmah. पिपठिषूणां बालानां नामानि कानि? पिपठिषूणां षष्ठी बहुवचनं, बालानां नामानि कानि? So in this way we have this flexibility of using krudanta in place of lakara. Mahodaya, third sentence once again
रिपीट करोतु महोदय, पुनरेकम्। पिपठिषुभ्यः बालेभ्यः पुस्तकानि न दत्मः। बालः पिपठिषया, that sentence, how do we know that अर्थ किम्? in that place we So in that place we are using tritiya vibhakti? what is the reason of his going to school? What does he wants to go there for? He wants to go to read or to study something, right? Pathitum पठनार्थम। ichha. Pathitum ichha. This is pathanartham VK or pathitum gacchati. Pathitum gacchati. Now here we have changed it to pathitum ichhaya gacchati. पठितुम् इच्छा अस्ति, तस्मिन् पठितुम् इच्छा अस्ति अथवा तस्य पठितुम् इच्छा अस्ति, तेन कारणेन विद्यालयं गच्छति। पठनार्थं गच्छति। हाँ, पठनार्थं गच्छति, परन्तु अत्र सम्बन्धः प्रयोगे पिपठिषया। महोदय, We can write पिपठिषार्थम् अपि गच्छति, but as we are focusing on akara apratyaya, so we have used पिपठिषया। अत्र चतुर्थी भवति वा महोदय? भवति एव। सो महोदय, एक संशयम् अस्ति। बालाः पिपठि शवः शालां सन्ति आल्सो I can write no महोदय। बहुवचन। So those who this are pipati shava is a what I say visheshana. So pipati shava is also prathama bahuvachan. It is a visheshana of balaha. Balaha pipati shanti. The meaning is the same. Balaha pipati shanti. Balaha pipati shavaha. Apparently there is no difference. Yeah. But no, how do I know? I have to put a tritiya bhakti pipatisha, not pipatisha. No. I don't know the difference. Basically, what you want to express. If I'm going to shala, for what reason? I may go to just play, or I may go to learn. I want to do something else. I want to do something additional bhava in the sentence. So this is how I can change. Put the word, I can use it differently. We cannot just use pipatisha asti. It is not just limited to pipatisha prathama vibhakti. So we can use all vibhaktis in here. Now please here check that pipatisha indicates the desire only and not the karta. So it does not have a bahuvachan. There may be bahuvachan, karta bahuvachane bhave. Parantu it is a bhava hasti. Pipatisha is just like a bhava. So although the rupani bhavanti, parantu pipatisha is just the bhava. So there may be many students with the same desire to learn, right? We don't have say desires. Desire is single. एक ही desire है पढ़ने की, खाने की, खोदने की, सभी अलग अलग डिजायर होती तो अलग बात होती। एक ही डिजायर है पढ़ने की, तो इसीलिए हम लोग एक वचन में यूज करते हैं उसको। So in bhava we are using sashti balanam pipatisha. For in all places we are using sashti vibhakti for because it is a sambandha pradarshayati खलु। केषां पिपठिषा अस्ति, केषाम् अस्ति वा कासाम् अस्ति, so balaha. So whose pipatisha in that sense. So here this is say pipatisha asti. Now this is simple karta and kriya padam. Pipatisha asti. Now whose? Now we are adding a sambandha. Whose pipatisha? So we can say balanam pipatisha asti. That sambandha shashti does not affect the kriya padam. So, and kartari vakye kriya padam कर्तारम अनुसरति, और जो भी अंतर में है उसको कोई मतलब नहीं है। कर्तरी में हमेशा क्रियापद कर्ता को फॉलो करता है। कर्ता का एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, क्रियापद वही हिसाब से चेंज होता है। हाँ पद्मा जी, प्रश्न अस्ति वा? महोदय, what is the meaning of balanam
Pipatisha vidyate. In the children, Saptami Vibhakti, is it, Mahodaya? No, Balanam Pipatisha. In the vidyate children, asti. Children have the Shashti. Children have the desire. Children have the desire to learn or to study. I thought in the children the desire is there. In the children, we can use either way. We can use either way, Pipati, Balana, but Shashti is more used. So I am in our book also only Shashti is given. So I am just considering myself for the Shashti only. Okay. महोदय, पुस्तकानि ददः ये कौन सा दद्मः हाँ म का ठीक से नहीं वो ठीक नहीं दद्मः Mahodaya, one more doubt. In second sentence, Pipatishun balan atra shakarasya dirgham bhavati. Same Pipatishu balebheha atra rasvam bhavati. Next one, Pipatishun again dirgham bhavati. द्वितीया षष्ठी विभक्ति सर्वदा द्वितीय दीर्घ भवति. द्वितीया बहुवचन षष्ठी बहुवचन दीर्घ अस्ति. Mahodaya, we have learnt in Pravesha Madhye, Tritiya Vibhaktya Saha will come. Ramena Saha, like Lataya Saha. So is it if it is a person or a karana, okay, so I can use. So if we are not, see, Vruttaha dandena saha chalati, we are not saying that. Vruttaha dandena chalati. Okay. Dandena saha नहीं बोलते हम लोग. This is not a correct usage. Dandena chalati. So दंड के साथ हाँ प्रयोग से चलता है. But जब हम लोग कोई जीवंत के साथ में जाते हैं, जैसे जीवंत है, राम है, लक्ष्मण है, उसका भाई है, बहन है, पापा है, कोई भी है, उसके साथ में हम लोग सह की याद यूज होता है. साधन. हाँ, सीता रामेण सह वनम गच्छति, रामेण सह लक्ष्मणेन सह. ओके सर, बालाः पिपठिषया शालां गच्छन्ति and पिपठिषया बालाः शालां गच्छन्ति, same meaning our. So in Sanskrit language, you can use pada anywhere. In the shloka, it depends upon the chandas. Shalam gachanti is boys go to study. Pipatishaya balaha. Pipatishaya bala means that Pipatishaya becomes a Ichuka balaha. Ichuka balaha. So please understand, this is not a Visheshana of the bala. The Visheshana of the bala will be Ukaranta, Ushabda. When we shift the this is a desire, it indicates the desire the balas have, not the bala itself. Ki trashaha balaha, pipatishu shavaha balaha. So pipatisha bala नहीं होता इसमें, pipatishavaha. Pipatishu जो उकारांत है, वो उसमें बाला को रिप्रेजेंट करता है, उसका विशेषण है. तो कर्तृ अर्थ में जो विशेषण होगा वो उकारांत होगा, और केवल जो डिजायर अपना इच्छा बताता है, जो भाव बताता है, वो उसके कर्ता के साथ में कोई रिलेशन नहीं है. धन्यवाद सर. सन्नन्तानां विषये ज्ञातुम इच्छा अस्ति वा? सो सन्नन्तानां विषये जिज्ञासा अस्ति वा? भोक्तुम इच्छया शृगालः सर्वत्र अटितवान्. इच्छया, so bubhukshaya. So this is bhoktum ichha taya. How do we define that? Bhoktum ichha taya. Right? Vigraha vakyam katham vayam kurmah. So tadrshameva. Bubhukshaya. Bhoktum ichha taya. Bubhukshaya. So this is the third vibhakti. He is roaming in the jungle for what reason? So he is famished, and that is why he wants to have some food.
महोदय ये श्रृगालः पुल्लिंग है जी, तो फिर मैंने क्या बताया था कि ये जो इच्छा जो है उसके साथ में कर्ता का कोई रिलेशन नहीं है। आप श्रृगाल को रिलेशन आप अटितवान में देखिए, एक तवतु प्रत्यांत रूप श्रृगालः अटितवान, श्रृगालः कुत्र अटितवान, श्रृगालः सर्वत्र अटितवान, कीदृशः श्रृगालः, पीडितः श्रृगालः, केन पीडितः अथवा कया पीडितः, भूक्षया पीडितः श्रृगालः सर्वत्र अटितवान। आप इसको अन्वय करते जाइए, धीरे 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 आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। इदानीं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः, समयः अस्ति। अहं कथां पठितुम् इच्छामि। पद्मावती एस महोदय विवक्षति किम्? यस सर। अहं कथां पिपठिष्यामि। उत्तमम्, अहं कथां पिपठिष्यामि। मम माता मां द्रष्टुम् इच्छति। वाणिश्री महोदय, अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया। पहले याद अच्छा कर दिया आपने, नहीं होगा। भादुरी आयर महोदय। दृक् धातु। हाँ, प्रयास करिए। दिदृक्षति। मम माता दिदृक्ष, मम माता मां दिदृक्षति। मैंने क्या 4 धातु बोला था? ज्ञा श्रु स्मृ दर्शाम सनः। 4 में आत्मनिपदी रूपम लगते हैं। दिदृक्षते। दिदृक्षते। मम माता मां दिदृक्षते। दिदृक्षते। आम, धन्यवाद। ज्ञा श्रु स्मृ दर्शाम सनः। आप ऐसे जब सूत्र के साथ में याद रखिएगा ना, आपको भूल नहीं होगा कभी भी। गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता सणौ कर्म। कहाँ पर पढ़ा था हम लोगों ने, बताइए? ऋजंत में। अब किसमें द्वितीय विभक्ति आएगी? सामान्य रूप से तृतीय आएगी। सो निह वह अध खाद छोड़ करके वो स्पेशल धातु है। बाद में हमको ये सूत्र देखना है, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म काणाम अणिकर्ता सणौ। ये सूत्र में 5 प्रकार के जो धातु हैं उसमें प्रेरित कर्तु की द्वितीय लगेगी और बाद में सबको तृतीय लगेगी। This is a short way. Sutra is very small. It is very easy to remember. And that is why I make it a point to include sutra in my class. So just by going through the sutras, you immediately have it in your mind. Okay. बालकाः प्रवासं गन्तुम् इच्छन्ति। प्राजक्ता साम्रे महोदय। बालकाः प्रवासं जिगमिषन्ति। उत्तमं, जिगमिषन्ति। उत्तमम्। सुषमा महोदय, छात्रः उत्तमफलस्य लिप्स्या सम्यक् अभ्यासं करोति। लिप्सया लब्धुम्। बोलिए, पूरा वाक्य बोलिए। उत्तमफलस्य लब्धुम् इच्छया। अन्य कोऽपि मा वदतु भवानी भगिनी। लब्धुम् इच्छा इज लिप्सा। तो अत्र तृतीया विभक्ति लब्धुम् इच्छया। इच्छया तृतीया विभक्ति। Yes. So, but how do you know you have to put because it's lipsaya? हाँ, लिप्सया। Okay, so लिप्सा लिप्सया। So, yeah, so labdhum इच्छया। Yes, sir. Yes, thank you. त्वम् उष्णपेयं पिपाससि। सोमशेखर महोदय, इदानीं वक्तुम् इच्छसि वा? इदानीं न महोदय। इदानीमपि न। त्वम् उष्णपेयं पातुम् इच्छसि। उत्तमं, पातुम् इच्छसि। आम्।
So these markers like comma, question mark are not there in the language itself. This is a new addition for students like us to differentiate whether it is a question mark or a comma. It is just by intonation or how you speak, the other person should know that you are asking a question or you are telling something. Like Tvam Ushnapeyam Pipasasi. It is just sentence. It is not asking anything. But if you are making a little bit of changing in your tone, Tvam Ushnapeyam Pipasasi, just indicate. So it will be a question mark. Va we can use, no Mahodaya. Tvam We can Ushnapeyam use anything, Pipasasi but va. without adding anything, just by changing the tone. Tone. Pipasasi and Pipasasi. That's right. We can always use api, kim, va, everything we can add, but without changing, we can just make an ordinary sentence a question mark. Aham shlokasya tatparyam jignase. Sujata Mahodaya, bhavati vadatu. Aham shlokasya tatparyam jnatum ichchami. Uttama. Uttama. Tapasvinaha moksham lipsanti. Satya Bhagini, vadatu. Tapasvinaha moksham labdum icchanti. Labdum icchanti. Uttamam. Mamta Sharma Mahodaya, Arjunasya vadatu. अर्जुनस्य जिज्ञासायां सत्यां कृष्णेन तस्मै गीता उपदेशः दत्तः. You have to identify the Sananta Padam and do the Vigraha Vakyam. महोदय अत्र तृतीय आवश्यकी किल? एक minute. I'll come to it. Let her give the answer. Bhavati atra Sannantapadam drashtum shaknoti va? Sannantapadam kim asti atra? सत्यां. Nahi. न. अर्जुनस्य का अस्ति? जिज्ञासायां. हाँ, तो जिज्ञासा इति कीदृशं पदम्? सन्नंत पदम है कि नहीं है? हाँ महोदय. हाँ, तो जिज्ञासा उसको विवग्रह वाक्य करिए. जिज्ञासा में कौन सी विभक्ति लगी है? जी धातु. जी धातु नहीं है. नातुम. मैंने खाली पूछा आपको कौन सी विभक्ति लगी. हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपसे ही निकलवाएंगे. जिज्ञासायाम, ध्यान से देखिए, लता शब्द याद करिए और देखिए कौन सी विभक्ति है. अब लता शब्द की तृतीया विभक्ति बोलिए, क्या है? एक वचन लता शब्द. अन्य कोऽपि मा सर्वे जानन्ति, भगिनी अपि जानन्ति. इदानीं कंफ्यूज्ड भवति खलु. सो दिस इज अ सप्तमी विभक्ति. सप्तमी विभक्ति. सो जिज्ञासायाम सत्याम. सो ज्ञातुम इच्छायाम. ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा तस्याम. सो ज्ञातुम इच्छायाम सत्याम. ये आपको रिप्लाई होना चाहिए. और मैंने सप्तमी क्यों लगाई, ये कौन बोलेगा? ये आप लोग शिक्षा में करके आए हैं. सती सप्तमी प्रयोग है, इसीलिए सप्तमी लगी है इसमें. समझ में आया भादुरी महोदय? जी. अर्जुन की जिज्ञासा होने के कारण कृष्ण ने गीता उपदेश दिया उसको.
कारण है उसको दिखाने के लिए सप्ति सप्तमी। यह सत्याम से क्या मतलब अर्थ हुआ महोदय? सत शब्द की सप्तमी, सती शब्द जो है उसकी सप्तमी विभक्ति एक वचन सत्याम। ये जब शत्रु प्रत्यय आप पढ़ेंगे तो शत्रु प्रत्यय में होगा, और ये सती शब्द है और यह सन शब्द है वो शत्रंत शब्द है, अस धातु का शत्रंत शब्द है ये, और सती सप्तमी में हम लोग इसकी सप्तमी रूपम हम लोग यूज करते हैं। धन्यवाद महोदय। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्जुन से जिज्ञासायाम सत्याम, इसका क्या अर्थ हुआ? अर्जुन की जिज्ञासा होने के कारण कृष्ण ने उसको गीता का उपदेश दिया। धन्यवाद। तो इसमें से सत्याम निकाल दिया तो भी चलेगा ना? ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, लेकिन आपको मालूम पड़ेगा कि ये सत्य सप्तमी की प्रयोग है, इसीलिए सत्याम लगाया जाता है। सत्याम डाला नहीं, उसको जिज्ञासायाम ब्रैकेट में भी आप डाल लगा सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी नहीं पकड़ पाए ना तो ब्रैकेट की बात ही अलग है। हाँ ये हम लोग लगाते हैं क्योंकि इजी रहेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, और कोई नहीं है, ठीक है ना। अब शिक्षके आगच्छति सति बालकः उत्थितः। शिक्षके आगच्छति सति, शिक्षकः वर्ग में जो आया ये उसका कारण है, उसके कारण बालक लोग खड़े हो गए। तो आगच्छति सति, जब आगच्छति के बाद में सति हम नहीं भी लगा सकते हैं तो आगच्छति फिर माइंड में एक आएगा, तो ये क्या लकार रूप है या फिर कृदंत रूप है, ये डाउट होगा, इसलिए बाद में सती लगा, ठीक है ना। अस्तु। अन्यम पिपासोः बालकस्य माता तस्मै जलं ददाति। भवानी भगिनी वदतु। पिपासोः पातुम् इच्छोः बालकस्य माता तस्मै जलं ददाति। उत्तम। पातुम् इच्छोः बालकस्य माता तस्मै जलं ददाति। यहाँ पर पातुम इच्छुः पिपासुः, ये है पिपासु शब्द है, उसकी षष्ठी एक वचन पिपासोः। तो ये क्षम्यता महोदय, पिपासोः इति कस्य विशेषणं भवति महोदय? बालकस्य माता अति नहीं, कीदृशस्य बालकस्य माता, कीदृशस्य बालकस्य माता जलं ददाति। धन्यवादः। बालकस्य माता पिपासु, कीदृशः न कीदृशस्य। अस्तु अस्तु महोदय। If you write कीदृशः it will become प्रथमा, कीदृशस्य षष्ठी। अस्तु धन्यवादः महोदय। ममता भगिनी प्रश्नः। महोदय पिपासोः इस तयोः लाइक दैट महोदय, षष्ठी द्विवचनम आएगा क्या? द्विवचन क्यों, आपको एक ही वचन तो है यहाँ पर, तयोः क्यों करना है आपको? आप बहु कर सकते हैं, पिपासुः तस्य कर सकते हैं, पिपासुः तस्य फिर आप कर सकते हैं, कंफ्यूज करना हो तो। और गुरोः एव किल? हाँ, गुरु शब्द पिपासुः पिपासोः। धन्यवादः महोदय। अच्छा, छात्रः कोविद पठनं चिकीर्षवः। चंपा छेत्री महोदय। छात्रः कोविद पठनं चिकीर्षवः। क्या हुआ, बंद क्यों कर दिया? कर्तुमिच्छवः। मैंने चंपा जी को पूछा था ना। अनम्यूट करके बोलिए। मैं बताऊं? नहीं, चंपा जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। छात्राः कोविद पठनं कर्तुम् इच्छवः। उत्तम उत्तम। चलिए, अभी तो समझ खत्म हो गया समय। एतावत् पर्यन्तम् अस्मिन् वर्गे कापि शंका अस्ति वा? सब समझ में आ रहा है आपको?
महोदय द्विसक् एकं वाक्यं वक्तुमिच्छामि। वदतु। अहम् अग्रिम प्रश्नस्य उत्तरं विवक्षति। सम्यक् वा? नहीं, अहम के साथ में कौन सा विवक्षामि पुरुष आएगा? विवक्षामि सबसे पहले आप ग्रामर ठीक करिए। अहम विवक्षामि। अहम अहं अब क्या बोलते विवक्षामि हैं बताइए? अहम अग्रिमस्य प्रश्नस्य विवक्षामि। उत्तरम विवक्षामि। जब आप उसको विशेषण विवक्षामि। विशेषण करेंगे तो प्रश्नस्य आपने किया तो अग्रिमस्य प्रश्नस्य, अग्रिम है वो प्रश्न की का विशेषण है, तो उसको भी जो प्रश्नस्य की जो विभक्ति है सेम विभक्ति इसमें भी लगेगी। अग्रिमस्य, अग्रिमस्य प्रश्नस्य उत्तरम दातुम इच्छामि दित्सामि। दित्सामि। अग्रिमस्य प्रश्नस्य उत्तरम दातुम इच्छामि, अग्रिमस्य प्रश्नस्य उत्तरम दित्सामि। अब ऐसा वाक्य यदि आप लोग अपना लेखन में डेली लिखेंगे तो आप कितना लगेगा ना, प्रौढ़ता आ जाएगी आपके वाक्य में। लगेगा कि कोई पठन कोविड में सब लोग पढ़ रहे हैं 4-4 साल के मेहनत के बाद में। चलिए, ये तो हम लोग का खत्म हो गया, क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है। इसको हम लोग और आगे फिर पढ़ेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना हम लोग करते हैं, और किसको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। महोदय ये जो जो आप वर्क जो ले रहे हैं इसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी है? जी है ना। आपको नॉलेज कहाँ से मिला ये लिंक? मुझे संस्कृत भारती का एक वो आया था, एक मैसेज, उसके थ्रू लिंक मिला। तो पहली बार मैंने क्लास अटेंड की है। अच्छा, ग्रुप में आप तो मुझे कोविड में हैं? जी जी ठीक है, आप एक काम करिए, मेरा फोन नंबर लिख लीजिए, उसमें एक अपना जी नाम भेजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा। जी 98301 98301 60017। 60017। हाँ, आप मुझे नमो नमः करके भेज दीजिए, मैं उसमें लिख देंगे, आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है? धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। महोदय रेकॉर्डिंग्स् कुत्र भवति? रेकॉर्डिंग्स् रेकॉर्डिंग अपि गणस्य जालपुटे स्थापितमस्ति। मुद्रणानि सर्वाणि मुद्रणानि गूगल ड्राइव मध्ये स्थापितानि सन्ति।